Hello everyone, myself Professor Nikita Ugale. Today we will discuss the topic plane curve from computational geometry. So in that, generate uniformly spaced endpoints on the parabola y square is equal to 4ax और x square is equal to 4ay. दोनों भी टॉपिक हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. ओके. So first of all, there are four standard equation of parabola. First one is y square is equal to y square is equal to 4ax. Your parabola is like this. Okay. Then x square is equal to 4ay. Your parabola will like this on y axis. So in your syllabus, we will discuss the generate uniformly spaced points on the first quadrant of the parabola. We will discuss only on the first quadrant. So यहाँ पे first quadrant में parabola का यही इतनी side आती है. So we will just find out the uniformly spaced points on the parabola in the first quadrant. Okay. So your आपके syllabus में क्या है, दोनों equation के लिए ही सिर्फ ये y square is equal to minus 4ax and x square is equal to minus 4ay ये आपके सिलेबस में नहीं है. So we will discuss only these two equations and uniformly spaced points on these two parabola. Okay. यहाँ पे भी only we will study uniformly spaced points on the first quadrant only. Okay. So we will discuss first algorithm, then we'll see example. So algorithm to generate n uniformly spaced points on the parabolic segment in the first quadrant of parabola. आपका नॉर्मल इक्वेशन क्या है, सेंटर पे होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अगर यहाँ पे सेंटर ओरिजिन 0 0 नहीं होगा, k एंड h होगा, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच. ओके. विथ यहाँ पे x की रेंज दी रहेगी, नहीं तो y की रेंज, दोनों में से कोई भी एक रेंज दी रहेगी. ओके. सो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप का एग्जाम्पल होगा तो भी और इस टाइप का एग्जाम्पल होगा तो भी आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस फॉर्म में लिखना है, जो भी आपका इक्वेशन होगा वो इक्वेशन. सो फर्स्ट वी कंसिडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. Then parametric equations are x is equal to a theta square and y is equal to 2a theta, where theta is parameter which lie between theta minimum and theta maximum. Second step में क्या करना है, आपको del theta find out करना है. So formula for del theta is theta max minus theta minimum upon n minus 1. सर्कल में यहाँ पे n रहता है डिनोमिनेटर में, लेकिन पैराबोला में n माइनस 1, बिकॉज पैराबोला इज अ ओपन कर्व. ओके. लेकिन यहाँ पे आपको थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दैट एक्स रेंज और वाई रेंज. अगर एक्स रेंज दी रहेगी तो आपको थीटा मिनिमम क्या फाइंड आउट करना है, थीटा मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला है, theta minimum is equal to square root of x minimum upon a and theta maximum is equal to square root of x maximum upon a. अगर x की रेंज नहीं दी है, y की रेंज दी है क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा थीटा मिनिमम के लिए, ये वाला, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू y minimum upon 2a and theta maximum is equal to y maximum upon 2a. After getting theta minimum, theta maximum, we will calculate del theta, increment in theta. So formula for del theta is theta max minus theta minimum upon n minus 1. Okay. Then after getting theta, del theta, we will find the points on the parabola on the first quadrant only. So initial point is, the formula for initial point is x1 y1 is equal to, we know the parametric equation for x, a theta square, and for y 2a theta.
So just take here theta minimum. So your initial points are x1 y1 is equal to a theta minimum square 2a theta minimum. After getting initial point, we will go for further points. So remaining points find using this formula. xi plus 1, yi plus 1, add homogeneous coordinate in that 1 equals to xi, yi 1. 1 आपको ऐड करना है क्योंकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए इसलिए. देन यूज दिस मैट्रिक्स 1 0 0 डेल थीटा 1 0 a इंटू डेल थीटा स्क्वायर 2a डेल थीटा 1. ओके, आपको डेल थीटा फाइंड आउट किया है आपने ऑलरेडी. यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सो आपको ये मैट्रिक्स की आंसर मिल जाएगा. आपके इनिशियल पॉइंट्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, यहाँ पे पुट करो. आप वैसे x2 x3 x4 x2 y2 x3 y3 पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे. सो आफ्टर फाइंडिंग ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑल इक्वली स्पेस्ड पॉइंट ऑन द पैराबोलिक सेगमेंट बाय द पोजीशन वेक्टर मैट्रिक्स x. जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल्स टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on. ओके अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही फाइंड आउट करना है बस. अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर स्टेप 6. उस स्टेप में क्या करना है आपको, लास्ट में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज करना है. यहाँ से एच एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में राइट डाउन करोगे एंड x स्टार इज इक्वल टू x इंटू दैट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो हियर वी कैन सी बाय वन एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज generate equally spaced 3 points on the parabolic segment in the first quadrant of parabola. Equation क्या दिया है आपको, y square is equal to 12x and x range is given 3 less than equal to x less than equals to 12. So first of all write down given equation y square is equal to 12x. आपको यहाँ पे कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ. So if we compare y square is equals to 4ax, we get the value of 4a as 12. So we get here 4a equals to 12. From that a equals to 3. First find out the value of a, then go for parametric equation. We know the parametric equation, x is equals to a theta square, y is equal to 2a theta. So put here the value of a, we get x is equal to 3 theta square and y is equal to 3 to the 6, so 6 theta. These are the parametric equations. Then find out del theta. This is step 1. Then go for step 2. Find out del theta. We know the formula for del theta. Theta max minus theta minimum upon n minus 1. So here value of n is 3 points. So 3 is value of n. लेकिन आपको थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम दिया है क्या, नहीं. So find out using the x range. Here minimum x is 3 and maximum x is 12. So we know the formula for theta minimum, square root of, if x range is given, then formula for theta minimum is square root of x minimum upon a and theta maximum is equals to square root of x max upon a. We have x minimum 3, so write down here square root of 3 upon value of a is 3. So we get here theta minimum as 1 and find out theta max. Theta max equals to square root of x maximum value is 12 upon value of a is
3. So we get here square root of 4, that is 2. So find out theta minimum, theta maximum. दोनों पे वैल्यू मिल गया है. We can find out the del theta. So put in that equation. We get here del theta equals to theta max. So 2 minus theta minimum is 1 upon n minus 1. So value of n is 3. So 3 minus 1, 2. So we get here 1 by 2 means 0.5. After getting del theta, go for next step, means find out the initial points. Okay. So for finding out initial points, we have parametric equation a theta square. So your initial points are x1 y1 is equals to a theta minimum square, a theta, wait, a del theta minimum square, no? A theta minimum square and y1. So we get here 2a theta minimum, 2a theta minimum. Put value here. First value is 3 into theta minimum square, 1 square. So 3 into 1, 3. Then 2 into value of a is 3 into theta minimum is 1. So we get our first point as 3, 6. x1, y1. Okay. So you can see here our initial point is 3, 6. Next we know how to find out remaining points using xi plus 1, yi plus 1, add homogeneous coordinate 1 equals to xi, yi 1 into this matrix. So we have value of del theta as 0.5. So put here value 1, 0, 0, 0.5, 1, 0, a. The value of a is 3. So 3 into 0.5 square, 2 into 3 into del theta is 0.5 into 1. Then solve it. 1, 0, 0, 0.5, 1, 0. 3 into 0.5 square is 0.75. This multiplication is 3 and write down 1 as it is. Then after getting this formula, go for points. So we find second point x2, y2, 1. So for x2, y2, 1, first previous point is x1, y1, 1 into this matrix as it is. Put here value of x1 and y1. So 3, 6, 1 into this matrix as it is. Just do the matrix multiplication. We get our second point here. Okay. Then for third point, how we will write third point? x3, y3, 1 equals to previous point of x3, y3, x2, y2, 1 into this matrix as it is. So check here. x3, y3, 1 is equal to x2, y2, 1 into that matrix. Write down value of x2 and y2 here, 6.75 and 9 into this matrix. So 12, 12, 1. We get our third point also. Question is that find equally spaced 3 points. So we get all 3 points here. So after finding all the points, in next step write down all the points in the position vector x. So x is equal to, your first point is 3, 6. So your first point is 3, 6, 3, 6, 1. So your second point is 6.75, 9, 1. Third point is 12, 12, 1. In last, remove this homogeneous coordinate. So we get the required points are 3, 6, 6.75, 9 and 12, 12. So this is your answer. Okay. So in same way, you can find out, you can solve this question also. So this question is for homework, do it yourself. Just see, question is generate uniformly spaced 4 points. So value of n is 4. Parabolic segment in the first quadrant. Parabolic पे क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछते हैं. ओके. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर
Again here x range is given, x minimum and x maximum value, and the equation is given, y square is equal to 4x. So we can solve this example in the same manner. Okay. So if y range is given, यहाँ पे क्या है, y की रेंज गिवन है. सो इस टाइप के एग्जाम्पल आप कैसे सॉल्व करोगे? बाकी सेम प्रोसेस है, ऑल प्रोसेस इज सेम, जस्ट डेल थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ता है. इसके फॉर्मूलेज ओनली चेंज है. सो थीटा मिनिमम y मिनिमम अपॉन 2a एंड थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू y मैक्सिमम अपॉन 2a. बाकी सब प्रोसेस सेम है. So we will solve this. Given equation y square is equal to 8x. Compare this equation with y square is equal to 4ax. Then we get here 4a, value of 4a is 8. So from that find out a. So a equals to 8 upon 4, we get here a equals to 2. Then write down parametric equation. X is equal to a theta square, y is equal to 2a theta. So put here value of a, x is equal to 2 theta square and y equals to 2 to the 4 theta. Okay. Then find out del theta. So formula for del theta is theta max minus theta minimum upon n minus 1. So we know the y range is given. Then formula for theta max and theta min is theta minimum is equals to y minimum upon 2a and theta maximum equals to y maximum upon 2a. So put here values of y minimum. Value of y minimum is 4. So write down here 4 upon 2 into a. So value of a is 2. So 2 to the 4. 4 upon 4, we get here theta minimum as 1. Then find out theta max. So here value of y max is 20 upon 2a. 2 into 2, 4. So we get here theta max as 5. After finding theta minimum and theta maximum, find out del theta. So we know formula for del theta is equals to theta max minus theta minimum upon n minus 1. Put here values. So we get 5 minus 1 upon the value of n is 3 points. So 3 minus 1, 2. So we get here 4 upon 2 means del theta is equals to 2. After finding out del theta, go for initial point. So we know initial points x1, y1 equals to this parametric equation, just write here theta minimum, a theta minimum square 2a theta minimum. Okay. So we have formula value of a and also theta minimum and theta maximum. So write down here value of a is 2 into theta minimum is 1 square, and here 2 into 2 into theta minimum is 1. So your first point is 2, 4. Okay. So after getting your first point, go for all the remaining points. We get here first point as 2, 4. Then go for next. Find out remaining all the points using this formula xi plus 1 yi plus 1 equals to xi yi 1 into this matrix. Put the value of del theta in that. So we know the value of del theta is 2. So put here 2, value of a is 2, del theta is 2. Okay. 2 into 2 into 2, 1. Solve this matrix 1 0 0 2 1 0 8 8 1. After getting this matrix, find out remaining points x2 y2 1 equals to its previous points. So x1 y1 1 into this matrix as it is. Put values of x1 and y1 here.
write down this matrix as it is and just do the matrix multiplication. We get here our second point 18, 12, 1. Okay. Then go for third point also in same manner, x3 y3 1 is equal to x2 y2 1 into this matrix as it is. Check here. So, after doing multiplication we get our third point as 50, 20, 1. After getting all the points, we will write all the points as position vector x. So, x is equal to, your first point is 2, 4, 1, second one is 18, 12, 1, 50, 20, 1, and then at last remove these homogeneous coordinates. So, we get all three equally spaced points on the parabola in the first quadrant are 2, 4, 18, 12 and 50, 20. सो यहाँ पे भी हम आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है और y की रेंज दी है, ठीक है, ये आप सॉल्व करो और n की वैल्यू कितनी है 5. सो सॉल्व इट. थैंक यू सो मच.